Did you start? Yeah, you can continue. Okay. So, good morning, everyone, and thank you all for joining this session. And आज के क्लास में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स्ड यूज करेंगे so that whichever language is comfortable for you, you can ask questions in those languages in that language and don't have to feel that pressure कि मुझे इंग्लिश में ही बोलना है या हिंदी में ही बोलना है जो जो भी suitable लगे. And chats will be taken care by Abhishek and Siddharth. So if you have any question and you are not able to say that by unmuting yourself, then you can just write it on the chat. So let's start today's class. So today's so as we have written that in our website कि हाउ टू सॉल्व इट प्रोग्राम का जो भी हमारा मॉड्यूल है ये मैथ ओलंपियाड प्रोग्राम का वन ऑफ द मॉड्यूल है, तो हम दोनों का ही ये पैरेलल में ही चल रहा है. तो ये दोनों के लिए, दोनों प्रोग्राम के लिए ये हमारी फर्स्ट क्लास है. सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम दो प्रिंसिपल्स सीखेंगे जो कि दे आर लाइक द बेस और यू कैन से वेरी फंडामेंटल और फाउंडेशनल pillars of problem solving skill. And I'm pretty sure that you must have heard at least these words, or maybe may have, like, you have read and did some questions on these principles. So the first thing is contradiction principle, and the second thing is extremality principle. So आज हमारा सारा फोकस इन्हीं दोनों प्रिंसिपल्स पे होगा. हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड सीखेंगे. डूइंग दोस क्वेश्चंस हम सीखते रहेंगे कि और छोटी छोटे ट्रिक्स और टिप्स क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग के, लेकिन हमारा मेन थीम आज का हमारा कॉन्ट्रडिक्शन और एक्सट्रीमैलिटी ही रहेगा. So before we dive into more rigorous maths, let's do some brain teasers or some puzzles, which will be somehow connected to our today's content, but not very deep into that. You might have seen this question maybe earlier. It is a very common question. So the question is, there are 3 bags of fruits. आई नो कि पिक्चर थोड़ी मिसलीडिंग है, बैग्स नहीं दिख रहे हैं, बॉक्स दिख रहे हैं, तो जस्ट रिप्लेस दैट वर्ड बैग विद बॉक्स. सो देयर आर 3 bags of fruits. One bag has apple in it, one bag has orange in it, and one bag has mix of apples and oranges. So each bag has a label on it. Either that bag has apple or orange or mix. So each bag has one label. Unfortunately, your manager tells you that all bags are mislabeled. So here, just try to imagine that you have 3 boxes in front of you. Each box has one label, and there is one information given that every box is mislabeled. So this is a very crucial information you have to keep in mind. Now, the question is, develop a strategy to identify the bags by taking out minimum number of fruits. So again, पिक्चर थोड़ी सी मिसलीडिंग है. हमें लग रहा है पिक्चर में कि बॉक्सेस खुले हुए हैं और हमें दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है. बॉक्सेस बंद हैं. यू आर नॉट एबल टू सी द फ्रूट्स. You can see the labels on the boxes, but you cannot see the fruits. So how would you go about this? I'll give you, say, 1 minute to think about this question. And if you already have an answer, so you can speak it out. Otherwise, just take 1 minute and think about this. What will be a strategy? Okay, so 1 minute is over. Do you have any strategy, Ishan? I'm not a very good one. I don't think it will be correct. Sorry, what did you say? I did Mama, not listen. Mama, I don't think it will be correct. It's okay, it's totally fine. यहाँ पे कोई भी आपको जज करने के लिए नहीं बैठा है कि आप अच्छा आंसर, सही आंसर करेंगे कि गलत. हम सीखेंगे. हमारा एम यही है कि हमें सीखना है कि क्या गलत हम सोच रहे थे, कहाँ पे हमें सही होने की जरूरत है. ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप
कोई ऐसा सोल्यूशन बताएं जो एक्चुअल में सोल्यूशन ना हो, थोड़ा कुछ गलत हो, तो हम सीखेंगे कि कहाँ पे गलती हुई और कैसे हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं कि आगे फ्यूचर में हम वी विल नॉट रिपीट दैट अगेन. सो गो अहेड. व्हाट डू यू थिंक? हाउ मेनी, चलो शुरू करते हैं यहाँ से कि हाउ मेनी टर्न्स डू यू थिंक आई विल नीड? कितने एप्पल्स या मतलब कितने बार हमें एक फ्रूट निकालना होगा टू अंडरस्टैंड कि क्या है किस बैग में? Mm, Uh, on 4 or 5. 4 or 5? You think that 4 or 5? Sorry. Your initial thought is there are going to be 4 or 5 turns, right? Yes. Okay, so can we go a little bit deeper? Why do you think that if 4 से 5 लगेंगे? Ma'am, first, let's say we take out a fruit out of any box and it turns out to be an orange. Mm-hmm. Then it might be the orange box or it might be the mixed fruit box. Okay, so let me just rewrite what you just said. So आपके पास आपके सामने ये 3 बॉक्स हैं. मैं थोड़ा सही पिक्चर बना देती हूँ. ये तीनों बॉक्सेस बंद हैं. एक के ऊपर लेबल लगा है एप्पल, एक के ऊपर लेबल लगा है ऑरेंज, एक के ऊपर लेबल लगा है मिक्स. नाउ व्हाट यू आर सेइंग कि हम एक Uh, बैग, कौन सा बैग आप उठाना चाहते हो बताओ? Ma'am, but ma'am, we don't know which bag are we going to choose. Like, we don't know the label. So, हाँ, सो अभी सिद्धार्थ ने एक सेंटेंस बोला कि द बॉक्सेस आर प्री लेबल्ड. दैट बॉक्सेस में पहले से ही लेबल लगा हुआ है, आपको हमने बॉक्सेस में लेबल लगा के दिया है. तो ये एक इंस्टेंस था कि हमने रख दिया ये कि ये 3 बॉक्सेस लगे हुए हैं और उसमें लेबल लगा हुआ है ऐसे. थोड़ा मैं क्लीन कर देती हूँ जिससे आप थोड़ा और अच्छे से. सो यू सेड समथिंग कि ऑरेंज Yes, बैग ma'am. से मैं उठा. हाँ. Now the question is, ma'am, more clear to me. Ma'am, if we start with the middle box, we are sure that it is either the apple box or the mixed fruit box. Great. So according to Ishan, either it will be an apple box or it is going to be a mixed box. Yes. And if we pull out a fruit and it turns out to be an orange, then it's sure that it's a mixed fruit box. Great. So I think I can write it better. So either it will be an apple or it will be a mix. So now you are saying that if we get orange from this, then we are sure that this is a mixed bag. But what if we get an apple? And then it will either be an apple box or the mixed fruit box. Great. So we will not be able to decide, right? Yes. So you have used, so in this turn, suppose in this situation, you have only used one turn and you were able to say that this box has this mixed label. So let's go into this direction first and then we will go into the another direction. So suppose this is your thing कि when you took some fruit from this box, orange आया, so then you were able to say that this bag is a mixed bag. Now what? How to understand like what are other boxes? आप क्या करेंगे? हमने ये बता दिया कि ये मिक्स है फर्स्ट स्ट्रैटेजी में. अब बाकी दो बॉक्सेस. हाँ. And then apple box becomes the orange box. Okay, great. Since orange box is like the middle box is the mix, you are saying that it is telling you that this apple box is an orange box. Yes, ma'am. Right. Then mixed box becomes the apple box. Apple box. So how many fruits did you use? How many turns did you use? 2.
टू, क्या मैंने डायग्राम Ma'am, गलत बनाया, दिख रहा है गलत? आपने टू, दो टर्म यूज किए कि एक? आपने एक्चुअली एक ही टर्म यूज किया, टर्न क्योंकि का आप, मतलब okay. फ्रूट होता है. Yes. That's what you have to make. सॉरी, Yes, ma'am. Yes. या तो अगर हमारे ऑरेंज वाले जो मिसलेबल्ड बैग था उससे हमें अगर ऑरेंज मिल जाता है, व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड. अगर हमें उससे ऑरेंज मिल जाता है तो हम केवल एक फ्रूट, एक टर्न में ही डिसाइड कर सकते हैं ये सारे लेबल्स. नाउ व्हाट इफ यू गेट एप्पल? एप्पल वाले सिनेरियो में क्या होगा? Then we'll not be able to surely say that it is the if it is the apple box or the mixed fruit box. Then we will start with the apple box. No, ma'am, will not be able to say if it is the apple box or the mixed fruit Yes. box. Yes. You are in dilemma. Yes. Then what are you going to do? Okay, I think we have spent a little bit like time on this, and we can see that कि Pull out कुछ a fruit cases from में the तो, apple box. हाँ, क्या बोल रहे हो? Pull out a fruit from the apple box. Okay. Then what are the possibilities? Orange or Either an it should apple be orange or or the an mixed apple. fruit. Yes. No. So if you pick one fruit from this box, either it will be orange or it will be apple, Yes. right? Yeah. Yes. So Yes. now what is your deduction? You are doing really good, Ishan. I think we have to think like this. धीरे धीरे जब हमें इंट्यूशन थोड़ा हमारा बेटर होता जाएगा तो हमें समझ में Sorry, आएगा ma'am, I was not able to listen to you. Oh, okay. Now My is it clear? speaking. Yes, ma'am. ओके, सो मैं ये बोल रही थी कि यू आर ऑन अ राइट ट्रैक. ये ट्रायल एंड एरर वाला ही लग रहा है क्वेश्चन, कि थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करेंगे, हम इससे देखेंगे उससे देखेंगे तो हो जाएगा. लेकिन देयर इज अ क्लीन वे टू डू इट. एंड मुदाबिर, इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड फॉर दिस क्वेश्चन, you can please write it on the chat. So we are kind of trying to develop that kind of intuition कि थोड़ा हमें क्लियरली दिख जाए वो आंसर, हमें इतना ट्रायल एंड एरर ना करना पड़े. तो आई थिंक फ्रॉम दिस क्वेश्चन एंड एनी क्वेश्चन, आई थिंक वी कैन learn one particular thing or one meta principle, that जब भी हम कोई क्वेश्चन हमको गिवन हो, we should write down all the conditions which are given explicitly. So अभी तो हम क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो हम लिख रहे हैं, लेकिन हमारा एम ये है कि हम विजुलाइज कर पाए वो सारी चीजें. तो अभी जो मैं लिख रही हूँ, जो बना रही हूँ, वो हमारा एम है कि हम विजुलाइज कर पाए. अभी के लिए हम लिखेंगे सारी चीजें. तो मैं जो मेटा प्रिंसिपल बोलना चाह रही हूँ ये है कि whatever is given, you just try to explicitly write down in front of you so that you have all the information. Now you can take your call कि from where should I start. So by that what I mean, जब हम ये क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ें तो हमको ये गिवन है. मैंने जब ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ा था तो मैंने बोला था कि there is a very crucial information given that all the bags are mislabeled. हमें बस ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है, और ईशान ने वो ध्यान भी रखा. एक बैग में उसने ये लगाया भी, तभी उसने ये डिड्यूस किया कि अगर ऑरेंज लेबल लगा हुआ है और क्योंकि सारे ही बैग में गलत लेबल लगे हैं, तो या तो वो एप्पल हो सकता है या तो वो मिक्स्ड हो सकता है. तो सिमिलरली बस एक स्टेप और आगे हमें जाना था. हमें सबकी इंफॉर्मेशन लिखनी थी. हमें ये भी लिखना था क्योंकि मिक्स्ड लगा हुआ है इसके ऊपर लेबल, तो इधर ये एप्पल हो सकता है, इधर ये एप्पल हो सकता है और ये ऑरेंज हो सकता है. I don't know why it is not working like a pen.
Is it legible? Is it It's readable? fine. It's fine. Okay, good. Yes, ma'am, I got it that it will be clear from here only that the mixed fruit, Yes, if yes, glass box is the apple box or the orange box. yes. So now once you have written it down, now I think the solution is screaming at you, isn't it? Just Yes, ईशान ma'am. just Mm. अब कौन से बैग से स्टार्ट करेंगे ईशान? ये तो आपने बोला अभी And last one. लास्ट वन, क्योंकि क्लियर चॉइस है। एक अगर आप Hmm. fruit निकालेंगे, अगर एप्पल हो गया तो ये एप्पल, अगर ऑरेंज हो गया तो ये ऑरेंज। तो जैसे ही हमने सारी इंफॉर्मेशन अपने सामने लिखी, हमें आंसर खुद ही बोल रहा है कि अच्छा हम इस तरह करें। तो हम इसको इस बैग से निकालेंगे, अगर एप्पल निकल आया तब तो हमारा आंसर आ गया कि इस पे तो एप्पल लेबल होगा। अगर इस बैग में एप्पल लेबल है तो फॉर श्योर हमारे मिडिल बैग में मिक्स्ड होगा, और अगर ये दोनों हमें पता चल गए तो फॉर श्योर हमारा पहला बैग ऑरेंज बैग होगा। So there was nothing in the question. Just what was the principle? You just write it down or just visualize all the things, all the information which is given in your question. Then things will become more clear. It will guide you towards the solution. So do you have any question, Mudabir, with the solution set, with the solution? Or Ishan, do you have any question? No, ma'am. Okay.